Good day, students. Today we are going to start with lecture number 8 of our subject, Total Quality Management. Now, as we were discussing in the previous lecture, we were discussing about the different ways of how the quality movement started. Now, especially the quality movement, how it was introduced in the field of education institutions also later on, after the 80s. Now, quality has a variety of ambiguous and contradictory meanings. So defining quality, once again, is very difficult. And because it has very vast and different meanings of quality, it's very difficult to pinpoint or define something as a whole. So much of the confusion over the meaning of quality arises because it can be used both as an absolute and as a relative concept. So quality in much everyday conversation is used as an absolute. This is a thing of quality. So अगर हम daily language में ये चीज़ concept देखें, so confusion बहुत create होती है the meaning of quality से to describe it, and different concepts are taken from it. Now, so if we look at it in a daily conversation method, it would be that this is a thing of quality. That means के ये चीज़ quality की है, and the word quality comes from the Latin qualis, meaning what kind of, or किस किस्म की quality. The quality of something can be said to be a part of its nature. So sometimes quality किसी चीज़ की अगर हम देखें तो हम उसको कह सकते हैं कि किसी चीज़ की nature का part हो सकता है quality, और Latin word qualis से ये बना है, ठीक है. तो we can consider that quality is maybe a thing or a part of a nature of something. How to explain it would be very difficult and tough, but people use quality freely when describing expensive restaurants and luxury cars. So word quality को describe करना maybe nature से related इतना easy नहीं है. लोग आम तौर पे they would associate the word quality with महंगे restaurants के साथ, अच्छी luxury cars के साथ, या किसी बहुत high standard product के साथ, या branded name. So it's used as an absolute quality. It is similar in nature to goodness, beauty and truth. So उससे मिलता जुलता है. It is an ideal with which there can be no compromise. So quality as a whole is an idea जिसमें कोई compromise की गुंजाइश नहीं है. Like quality, if maintaining quality, that means that it has to be of such high quality and such high standards that item that a person could just judge by looking at it, that yes, this thing, this exhibits quality, or this shows quality. So it is an ideal which can be, there can be no compromise. So as an absolute, things that exhibit quality are of the highest possible standard, and that cannot be surpassed. So quality products are things of perfection, made with no expense spared. So they are valuable and convey prestige to their owners. Quality cars, for example, now are hand-built and expensive, and have interiors of walnut and leather. So rarity and expense are two of the features of quality in this definition. So अगर हम quality को हम judge करना चाहें किसी material product के उस point of view से, so let's say for example हम cars की अगर product लेते हैं तो वो ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा high quality या expensive cars होंगे, they would be hand built, और उनके interiors जो है ना वो walnut के wood से या leather से बने हुए होंगे. Now that could be maybe defined like if the car seats are of leather, then we would say yes, it's very of high quality. So defining quality with the expense is maybe easier in this way. So rarity and expense are two of the features जो है जो quality को define करने के लिए use होते हैं. एक जो चीज़ बहुत rare हो, जो commonly available ना हो, और दूसरा उसका कि वो expensive हो. Now quality in this sense is used to convey status. So इस point of view से अगर हम देखें तो ये सिर्फ status का बता रहा है quality, and positional advantage,
and the ownership of things of quality sets their owners apart from those who cannot afford them. So कुछ चीज़ें ऐसी जो है ना जो जिन owners हैं जिनको they own stuff or that is very expensive or rare, they would be set apart, they would be separated, considered in a different lot than the people who cannot afford such expensive stuff. Now quality is a concept with class. So social class का concept आप उसको ये नहीं consider कर सकते हैं. It is synonymous with high quality or top quality. So क्वालिटी को हम कॉन्सेप्ट अगर हम सोशल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम हाई क्वालिटी या टॉप क्वालिटी चीज़ों की डिस्कस करते हैं. नाउ टू कोट फेफर एंड कूट इन 1991 ऑन द सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ अस एडमायर इट, मेनी ऑफ अस वांट इट, फ्यू ऑफ अस कैन हैव इट. तो क्वालिटी को उन्होंने कैसे डिफाइन किया? अकॉर्डिंग टू फेफर एंड कूट, दे वुड से कि वी एडमायर इट, मोस्ट ऑफ अस, यानी हमसे ज़्यादा जो है वो लोग उसको एडमायर करते हैं. बहुत हम में से जो है वो क्वालिटी, वो चीज़ वो चाहते भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको वो हासिल होती है. So that means then in a very very easy way, so if you put it that only the rare and the expensive things can be considered of quality. So the concept of quality would be then only considered as in the social class. So it's only the most rich people or the people high in society could maybe afford quality stuff then. Now used in the educational context though, this concept of quality is essentially elitist. So by definition only a few institutions are able to offer such a high quality educational experience to their learners. Now most learners cannot afford it and most institutions cannot aspire to provide it. So अगर educational point of view से अगर हम देखें तो ये सिर्फ elite class में आप ये नहीं वो कह सकते हैं कि essential part जो है ना concept जो है quality का आता है. and कुछ institutions ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा elite class को जो cater करते हैं. they are very expensive schools and they would be considered as high quality educational experience because they are hiring very expensive faculty and staff, and unke learners bhi, they're paying a huge amount in their fees to gain that experience. So most of the learners cannot afford it. Everyday people, normal people in the average social class cannot afford to go to such schools, and most institutions jo hai, they cannot aspire to provide it. They don't have such a strong financial background to provide their common learners with that high quality standard. So quality in the technical sense is largely a relative concept. So technical sense में अगर देखें तो it's just a relative concept. The relative definition views quality not as an attribute of a product or service, but as something which is ascribed to it. Now डेफिनेशन अगर हम देखें क्वालिटी की जो है रिलेटिव डेफिनेशन क्वालिटी को व्यू करने की, तो इट वुड बी कि वो सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस की एट्रीब्यूट या कोई ख़ास उसकी कोई फीचर नहीं है, बट इट्स समथिंग टू बी विच इट इज़ अस्क्राइब टू इट, यानी उससे रिलेटेड उसको यानी वो पॉइंट आउट कर देते हैं. लेट्स से दैट द क्वालिटी ऑफ योर एसे वेरीज बिटवीन गुड एंड एक्सलेंट. सो अगर आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेशन में हम उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि लाइक हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट इट्स ऑफ क्वालिटी. वी वुडंट बी डिस्क्राइबिंग इट एज एन एस्पेक्ट ऑफ द एसे बट एज हाउ द एसे वाज रिटन. सो is it written in good quality or is it written in excellent? In excellent, that means that the textual form and the sentence structure and the vocabulary used is of very high quality. Or good would be that it is just normal. Now quality in this sense is about being measured against criteria. So criteria के sense में वहाँ पे अगर हम cars के हिसाब से देखें तो it was measured in according to the social class. In this it would be measured in against criteria. Criteria हम एक standard एक set कर देते हैं और उस criteria तक अगर वो यानी उस पे fulfill होता है तो then we would say that yes it is of quality. Now it is not an end in itself, but a means by which the end product is judged as being up to or not up to standard.
So we can't say that it is an end in itself, but we can say that it's a means by जो end product जो है उसको कैसे judge किया जा सकता है इस पे, and as being के वो उस standard is it up to that standard or not, यानी उस एक standard एक procedure हम कह देते हैं कि this is the quality of an essay or these are the criteria on which it's going to be judged, and does the end product really come up to that and come up to that level जिस पे उसको judge किया जा सके excellent point of view से. Now quality products or services in this relative or ascribed definition need not to be expensive or exclusive. So इस point of view से अगर criteria wise हम अगर judge करते हैं तो it doesn't have to be expensive and it doesn't have to be very rare or something जो less exclusive हो. So they may be beautiful but not necessarily so. So they do not have to be luxurious or special either. So they can be ordinary, commonplace and familiar overhead projectors, laptops, ballpoint pens, and the school catering service may all exhibit quality. So educational field में ज़रूरी नहीं है कि कोई luxurious car की तरह वो luxurious हो या उसकी seating luxurious हो, interior उसका luxurious हो या बहुत खूबसूरत कोई चीज़ बनी हुई है तो कोई product तो उसको हम necessarily कह सकें कि that is of high quality. But educational field में हम maybe school के catering जो service है उसका हम judge कर सकते हैं कि the way or which standard it falls on, या जो overhead projectors हैं वो किस quality के हैं. That means that if they are working to their prescribed standards or not. फिर laptops, if they are of good quality, we would say that means that they are from a good brand with good features. Ballpoint pens also. So any product or service can aspire to the label quality. Now they do not have to be exclusive. ज़रूरी नहीं है कि वो exclusive हो. They can be aspiring quality label जो है ना, anyone can be considering that. Any of these products can be considered as quality. So while the absolute notion is elitist, the relative notion is potentially egalitarian. So अगर हम देखें तो एब्सोल्यूट इस सेंस में नहीं आता नोशन का क्वालिटी का, बट उसको हम रिलेटिव नोशन को हम देखेंगे तो एगलिटेरियन जो है ज़्यादा हम उसको जज करेंगे. मतलब कि वी वुड से दैट इट्स मोर ऑफ डिस्क्राइबिंग इट विद क्राइटेरिया इंस्टेड ऑफ विद रेयरिटी. यानी रेयर होना ज़रूरी नहीं है बट उसका एक क्राइटेरिया एक स्टैंडर्ड पे मीट करना वो ज़रूरी है. नाउ व्हाट अलाउज द लेबल ऑफ क्वालिटी to be ascribed to any product or service is that it meets the standards set for it. So एक चीज़ को हम जज करना क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम जज करते हैं और हम कहते हैं कि कोई लेबल हमने उसको देना है क्वालिटी का, तो वो हम उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को हम उसके जज करेंगे कि वो जो उसके स्टैंडर्ड सेट हैं उसको वो किस तरीके से मीट कर रहा है. Now it must do what is claimed for it and do what its customers expect of it. So let's say if a laptop, then it is supposed to be working in top condition. So हम कहेंगे कि जो customers की needs है या उनकी expectations है उस पे वो fulfill कर रहा है उसको, या standard पे जो है ना आ रहा है, and it should be working in that same features जो उसने claim किया कि these are the features that it's going to have, then it definitely should have those. Then in that point of view we could maybe label it with the word quality. Now in other words, it must be fit for purpose as the British Standards Institution defines quality. So in this relative sense, quality is about measuring up to predetermined standards and meeting those standards time and time again. So इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी जो है वो जो स्टैंडर्ड्स उसके लिए सेट कर दिए गए हैं या मेंटेन करने के लिए बता दिए गए हैं कि दीज आर द प्री डिटर्मिन्ड, यानी पहले से डिटर्मिन कर दिए गए हैं कि ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वो उस स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है एंड टाइम टू टाइम उनको जो है ना उन स्टैंडर्ड्स पे वो फुलफिल हो रहा है, तो देन वी वुड से दैट यस इट इज़ फिट फॉर पर्पस और इट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी. Now the relative definition of quality has two aspects to it. So relative definition जो है quality का उसके दो aspects हैं.
The first is concerned with measuring up and ensuring conformity to a predetermined specification. So first हम कहेंगे तो measuring up यानी उस level तक आना, ठीक है, and ensuring conformity जो है predetermined specification जो उसकी दे दी गई है उसके ऊपर वो fulfill हो रहा हो. The question is that is asked would be that does this good or service do what it is asked or expected of it? So this is fitness for purpose. So fitness of purpose को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि कोई भी गुड या कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, ठीक है, वो जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो उससे एक्सपेक्टेशंस है, उसको वो फुलफिल कर रहा है या नहीं. एंड अगर वो उसको फुलफिल कर रहा है तो दैट वुड बी फिटनेस फॉर पर्पस. दैट मीन्स कि उसका जो पर्पस है उस पर वो कम्प्लीटली फिट हो रहा है. नाउ दिस इज समटाइम्स कॉल्ड द प्रोड्यूसर डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी और द प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी. So इस चीज को दूसरे वर्ड्स में फिटनेस फॉर पर्पस को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहे तो इट वुड बी वेरी सिंपली एक्सप्लेन्ड लाइक प्रोड्यूसर डेफिनेशन और क्वालिटी और द प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी. Now in an industrial setting, quality is achieved by products or services meeting a predefined specification in a consistent fashion. So अगर इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वालिटी को कैसे अचीव किया जा सकता है प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में, जो उसकी स्पेसिफिकेशंस उसके प्री डिफाइंड हैं उनको मीट करने से, और डू इट इन अ कंसिस्टेंट फैशन बाय डूइंग इट कॉन्स्टेंटली वो उसी लेवल ऑफ स्पेसिफिकेशन पे फुलफिल होना चाहिए, तो वो हम कहेंगे कि क्वालिटी मेंटेन कर रहा है इंडस्ट्री में. नाउ क्वालिटी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ प्रोड्यूसर हैविंग अ सिस्टम, so known as a quality assurance system that supports the consistent production of the good or service to a particular standard or specification. So दो concepts जो हैं quality के, पहला कि वो प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशंस पे प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है वो पूरा उतर रहे हो, एंड देन दूसरा ये कि प्रोड्यूसर का जो है उसके पास एक सिस्टम होना चाहिए, जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उस सिस्टम सर्विस को या उस गुड को, वो उसके पास एक क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम हो और उसके तहत वो उसको जो है ना कंसिस्टेंट प्रोडक्शन को वो सपोर्ट करे, और खास स्पेसिफिकेशन हो, स्टैंडर्ड हो जिसके ऊपर वो वर्क कर रहा हो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, and it would be maintaining the quality to come forth on the quality assurance system. Now in this definition, popular cars as well as luxury models can be quality products. So अगर इस definition के ऊपर हम जाते हैं तो popular cars जो है ना, मशहूर गाड़ियां हैं या luxury models जो हैं, they could be considered as quality products. Now luxury, beauty, exclusivity and price do not enter into the equation. इसमें अब luxury, beauty और रेयरिटी या एक्सक्लूसिविटी जो है वो और प्राइस जो है वो इस चीज में में नहीं गिना जाता. ना इट डज नॉट मैटर वेदर दे आर फोर्ड्स और रोल्स रॉयस so long as the product conforms to manufacturer specifications and standards. So अगर हम conformation to specifications and standards के हिसाब से अगर जज करें किसी प्रोडक्ट को या क्वालिटी को, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसका ब्रांड देख के वो करें. हमने सिर्फ ये देख रहे, हमें ये ज़रूरी नहीं होगा कि वो गाड़ी जो है फोर्ड्स है या रोल्स है या होंडा है या टोयोटा है, बट कि उसकी जो स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं, जो मैन्युफैक्चरर ने बताया कि इसके अंदर ये फीचर्स होंगे और ये इस तरह डिज़ाइन किया गया है, वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट करता हो और उसको फुलफिल करता हो. सो बोथ कैन बी क्वालिटी प्रोडक्ट्स. तो दोनों में या इन सब में जो है वो सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. नाउ अ प्रोडक्ट एग्जिबिट्स क्वालिटी सो लॉन्ग एज इट कंसिस्टेंटली मीट्स द मेकर्स क्लेम फॉर इट. तो जिसने बनाया है उसके क्लेम के मुताबिक अगर वो वर्क करे या वो प्रोडक्ट उस लेवल पे जो है आता है, तो दैट मीन्स के it exhibits that quality and then it would be considered as a quality product. Now this view of quality is sometimes called quality in fact. अब इस व्यू को अगर हम point of view से देखें तो वो quality in fact के point of view से जाना जाएगा. Now quality in fact क्या है? Quality in fact is the basis of the quality assurance systems
devised in accordance with the international standard ISO 9000. So quality in fact अगर हम देखें तो वो quality assurance systems में जिस तरह ISO 9000 के certificates develop किए, international standard है, उसके मुताबिक अगर हम जज करें तो फिर उनकी जो सारी requirements है उसको जो अगर वो पूरा कर रहा हो तो that would be quality in fact. Now the procedural concept places considerable emphasis on working to define systems and procedures. So अगर हम इस point of view से देखें तो procedural concept जो है वो ज़्यादा emphasis किस चीज़ पे डाल रहा है, जो systems और procedures जो define हुए हैं to define those systems and procedures, and it define the quality inbuilt quality index. Now this is seen as the method most likely to produce a standardized or quality outcome. So ज़्यादा हम इसको judge करेंगे कि ये quality outcome हमारी quality की हो, so we would consider these methods mostly in it to go working on defined systems or procedures. Now quality is achieved by putting systems and procedures into operation. क्वालिटी अचीव कैसे की जाती है? क्वालिटी अचीव करने का तरीका क्या है? वो सिस्टम्स और प्रोसीजर्स में क्वालिटी इनबेड हो, उसके तरीके या उसकी मेन ऑपरेशंस जो है क्वालिटी के टू इम्प्रूव क्वालिटी वो प्रोसीजर के बीच में हो और वो सिस्टम में ही इनबेड हो, ठीक है, उसी में इनबिल्ट हो जाए. So then we would say, and ensuring that those systems are efficiently and effectively operated, और वो properly operate हो रहे और effectively काम कर रहे हो, तो फिर then we could say yes, we would be achieving quality in that product. Now it is the audit trail approach to quality. Now the procedural concept places considerable emphasis on working to define systems and procedures. So अगर procedural concepts हम देखें, so it would place considerable emphasis, वो ज़्यादा emphasis दे रहे हैं systems के ऊपर, defined systems पे और procedures पे. Now this is seen as the method most likely to produce a standardized or quality outcome. तो इस चीज़ को हम ज़्यादा किस तरह judge करेंगे कि it would be a method most likely to produce a standardized यानी quality outcome को कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ में क्वालिटी एंड रिजल्ट आपका बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी हो, सो उसमें और वो स्टैंडर्डाइज्ड हो कि वो प्रोडक्ट जो है इट वुड प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन द सेम स्टफ विद द सेम सिस्टम of quality. So quality is achieved by putting systems and procedures into operation. So उनको operation में डालने से and ensuring that those systems are efficiently and effectively operated. Now it is the audit trail approach to quality. Today much quality work is concerned with finding appropriate evidence that the way particular activities within the institution have been carried out. तो एक institution के अंदर किस तरीके से कोई चीज़ handle की जा रही हो उसके point of view से हम देख सकते हैं कि क्वालिटी पे काम हो रहा है या नहीं. Now the procedural concept is about proving that things have happened in accordance and predetermined specifications. So if it's specified and if it's explained that the things that were supposed to happen, if they have happened according to that and according to the predefined or how they've specified that this is the method is going to happen, if the procedure goes according to that, then that would be the procedural concept. So it ensures that activities conform to requirements. Although critics of the approach argue that it can stifle creativity and innovation. So sometimes we would say that वो innovation या creativity को stifle करेगा, and although they would say that proving, approving and reporting are the key descriptors of this largely instrumental approach to quality. So इसमें prove करना, approve होना and report करना ये key descriptors हैं mainly largely instrumental approach जो है quality का उसके लिए. Now it is accountability or audit approach that is concerned to ensure the consistency and conformity. It is based on the predominantly hard indicators of measurable performance. So in education, hard quality indicators include public examination league, tables for schools and colleges. Now transformational quality is different.
it has less to do with systems and procedures and more to do with continuous improvement and organizational transformation. So अगर हम ट्रांसफॉर्मेशनल क्वालिटी को जज करें तो वो उससे ज़रा डिफरेंट होगा. वो उससे डिफरेंट किस कॉन्सेप्ट से होगा कि उसमें सिस्टम्स और प्रोसीजर्स में इम्प्रूवमेंट या स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए, बट उसकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प होना चाहिए कि पूरे एक सिस्टम जो है या एक कल्चर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो ट्रांसफॉर्म हो जाए और उसमें एक कंटिन्यूस तौर पे इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाए. नाउ दिस कॉन्सेप्ट views quality as a complex process with a wider canvas. So it focuses on the softer and more intangible aspects of quality. Now these softer concepts include care, customer service, and social responsibility, and often go to the heart of the difficult and intangible issues of customer satisfaction and delight. So sometimes ये जो ज़्यादा intangible aspects हैं वो ज़्यादा किस पे softer और more intangible aspects of quality वो ये होंगे कि वो customer care क्या है, customer service कैसी है, social responsibility क्या है, and then intangible issues जो है जो customer satisfaction हो और customer delight हो product से. Now it is often said that while the procedural notions of quality are essential and necessary, they are by themselves not sufficient to ensure customer loyalty. So अगर हम सिर्फ concept of quality को procedural point of view से देखें तो वो essential तो है, ज़रूरी तो है कि वो implement हो, but उससे customer loyalty की कोई guarantee नहीं है. Because obviously procedural point of view say alright they are maintaining quality, but it is not coming to the needs of the customer. So if they are not fulfilling the needs or the requirements of the customer, or they don't know the wants of the customer, then it would be very difficult to maintain customer loyalty, and then they would be breaking customers and losing them. So the things that bring customers back time and time again and hold their allegiance are often centered on personal service and customer care. So if a customer is being treated well, let's say, or usko personal service अच्छी मिली है, या if he's been spoken to in a nice, decent way, even let's say at a restaurant, maybe the food might not be that great, but if the service is great, then we would love to go there again and again, just because the concept of being served in a proper or nice manner would be very appealing. So, or let's say if any at any services in any other, let's say for example in the telephone industry, if we let's say nowadays go to all these mobile companies and see that if their customer cares will not provide us with that quality or that care or that extra attention, then we would stop going towards them. We would want to shift to a different, let's say a different cellular company or a different mobile system. So bringing back customers and again, चाहे वो restaurant है, चाहे कोई educational institution है, चाहे वो आपका product आप sell कर रहे हैं market में, चाहे वो restaurant है, चाहे जो भी है, ये telephone company है, कोई भी industry है ऐसी, it all means कि आपके जो है जो पर्सनल सर्विस और कस्टमर केयर जो आप शो कर रहे हैं उसकी वजह से कस्टमर बार बार आपके पास आता है वापस. That's the major factor. It's not just the product that you're giving. So transformational quality is achieved not through adhering to systems and procedures, but through the exercise of leadership. So transformational quality हम इसलिए कह सकते हैं कि वो systems और procedures में से गुजर के नहीं आता, but वो good quality leadership से. So it is leadership that establishes a vision that translates into customer service. So अगर हम ये जज करें तो हम कहेंगे कि leadership जो है वो ऐसा vision create करता है जो customer service and builds the structures and organizational culture that empowers staff to deliver a quality service. So वो staff को वो quality दे रहे हैं कि customer service उनकी improve हो या वो quality service deliver कर सकें अपने customers को. So better leadership would translate into that. If the leadership is good, then obviously the staff would be very cooperative in working well with them and providing good quality service also.
Now, whereas the procedural concept is about proving, the transformational approach is about improving. So, procedural जो concept है वो proving है, तो जहाँ transformational approach होगा वो improving होगा, like improving quality measures in your product or service. Now, it is about doing things right, not just doing the right things. It is a state of organizational mind that sees continuous improvement at the very heart of the quality process. So, ये वो state of mind है, organizational mind है, जो आपके leadership में हो, जो continuous improvement देखना चाह रही हो और उसका quality process के center में, उसके heart में ये चीज़ हो कि continuous improvement होती रहे उसके product या service में. Now, transformational quality blends the aspirations of customers with the empowerment of staff. It takes a wide and more eclectic view of quality. It puts the customer first and seeks to expand their horizons. So, major ये चीज़ क्या कर रही है transformational quality? It is trying to कि वो customer की needs पहले seek कर रही है, उनकी wants पहले देख रही है और फिर उसके मुताबिक अपने आप को expand करके उन expectations या उन needs को पूरा करते हुए वो अपनी product को या अपने service को provide करते हैं. Now, in an education setting, let's say, the transformational culture is a function of staff motivation and academic leadership in a setting that is student-centered. So, इसमें staff motivate कितना है, motivation level उनका क्या है और academic leadership आपकी कैसी है, वो based है student-centered यानी उस पे कि transformational culture क्या एक जो है ना function कर रहा है institution में. Now, transformational quality aims for excellence and is satisfied with fitness for purpose. So, main चीज़ transformational quality जो है वो क्या चीज़ aim कर रही है? It's aiming for excellence and is satisfied with the fitness for purpose. So, this is not to confuse it with the absolute definition of quality. Excellence is an aspiration, a striving. So, excellence को हम कैसे judge करते हैं? कि it's an excellence is an aspiration, a striving, something that we are striving for, या कोई एक ऐसी aspiration जिसको हम पूरा करना चाह रहे हो. Now, what transformational quality is about is aiming high and enduring that there is a quality improvement agenda in the place. So, transformational quality जो है वो क्या चीज़ aim कर रही है कि उसमें quality improvement agenda हो आपका, जिसको फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. The next, when we speak about the concepts of quality, now the important part of making the distinction between the procedural and the transformational aspects of quality is not to label one right and the other wrong, but both concepts play a key role in understanding quality. Now, the points of distinction is to recognize that there are different approaches to achieving quality. So, concept सिर्फ ये नहीं है कि वो एक चीज़ गलत है और एक चीज़ सही है, सिर्फ उसकी definition या उसका aspect हमें clear हो जी कि एक गलत point of view है और एक सही है, but concept जो है उसका की रोल जो है वो उसको समझने में है इस चीज़ का कि क्वालिटी बेसिकली किस तरीके से recognize कर सकते हैं कि what are the different approaches to achieving quality. Now, the pursuit of quality is an exercise requiring not only well-developed and understood systems and procedures, but also a customer-oriented transformational culture where individuals are given the responsibility for the quality of work in their area and can contribute fully to its achievement. So, pursuit of quality हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि it's just an exercise जिसमें हम well developed या understood systems को follow कर रहे हैं या उन procedures को follow कर रहे हैं, but वो customer oriented भी होता है culture, like where जहाँ पे individuals को जो है ये responsibility दी जाती है कि quality of work जो है वो अपने work area में लेके आ सके और वो properly quality को achieve करने के लिए properly contribute कर सकें, fully contribute कर सकें. Now, any discussion about the nature of quality
has to center on the crucial role of the customer. So कोई भी discussion जो है about the nature of quality वो हमें center करनी है crucial role of consumer के ऊपर. Now who should decide whether a school or college is providing a quality service? The answer will tell us much about the values and aspirations of the institution. So एक institution या एक college या एक school है या एक university है, हम कैसे जज कर सकते हैं कि उसकी क्वालिटी सर्विस कौन जज करेगा? अगर हम इसका आंसर देखें तो हमें उसके वैल्यूज और एस्पिरेशंस जो है ना उस इंस्टीट्यूशन के पता लग जाएंगे. It is essential to have a clear idea of who is ascribing the attribute of quality. So ये चीज बहुत essential है कि point of view बहुत clear होना चाहिए. Now the views of producers and consumers are not always identical. So consumers जो आपका जो consumers हैं और जो produce कर रहे हैं product को या service आपको produce कर रहे हैं, उनके व्यूज जरूरी नहीं है कि आइडेंटिकल हो या मिलते जुलते हो. अ कंज्यूमर कैन हैव अ वेरी वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट और अ वेरी डिफरेंट व्यू ऑफ थिंग्स देन द पर्सन हु इज प्रोड्यूस्ड इट. So it does not happen that consumers reject perfectly good and useful products and services. So ऐसे नहीं होता कि कंज्यूमर जो है वो कोई बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, ये यूजफुल प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, उसको रिजेक्ट करते हैं. Providing a service to specification does not guarantee success. तो ये चीज़ प्रोवाइड करना कि सर्विस टू स्पेसिफिकेशन जो है वो सक्सेस की गारंटी नहीं देता. Organizations that follow the TQM path regard quality as being defined by their customers. So they are the final attributors of quality, and without them the institution will not exist. So organization में जो है total quality management के path को जो है regard अगर किया जाए quality as being defined by their customers, सिर्फ customers के point of view से अगर हम define करें तो ये final attributes of quality नहीं होगा और institution cannot exist without their customer needs or their customer defined requirements. So the institution that champions total quality management as its philosophy has to use all means of its disposal to explore their customer needs. So they have to develop such a marketing system or such a system in their institution in which that they can confirm that their total quality management philosophy is being used and is at its disposal, and what the customer needs or wants or their requirements. We could find them out and then act according to that. Now, as Edwin L. Arts, the chairman of chief executive of the Procter & Gamble company, has put it. So, according to him, उन्होंने एक चीज़ कही Procter & Gamble company के chief executive ने कि our customers are both those who retail our products and those who ultimately use them. So हमारे कस्टमर्स ना सिर्फ वो लोग हैं जो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, बट वो लोग भी जो हमारे प्रोडक्ट को रिटेल कर रहे हैं. Now, who are selling them? Now, total quality means knowing them in ways and depths that never fully have been explored before, and using this knowledge to translate needs into innovative new products and business approaches. सो टोटल क्वालिटी जो है वो सिर्फ इसका ये मतलब नहीं कि वो कस्टमर आपके रिटेलर्स और आपके जो कंज्यूमर्स हैं सिर्फ वही यूज़ कर रहे हैं, बट टोटल क्वालिटी मीन्स नोइंग देम, उनको उस तरीके से जानना एंड नोइंग देम टू दैट डेप्थ और कम्प्लीटली एक्सप्लोरिंग एंड बिफोर एंड यूजिंग द नॉलेज, और फिर उस नॉलेज को यूज़ करना ताकि इनोवेटिव नए प्रोडक्ट्स आप ईजाद कर सकें, नए बिजनेस अप्रोचेस आप लेके आ सकें अपने इंडस्ट्री में, एंड आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन मीट कर सको. Now, quality can be defined as that which satisfies and exceeds customer needs and wants. So, quality हम किस चीज़ को कैसे define करेंगे कि it satisfies and exceeds the customer needs and wants. उनकी needs और wants को exceed जहाँ कर रहा हो तो उसको हम कह सकते हैं कि ये it's like even better than what they want or they need. Now, this is sometimes called quality in perception. Now, quality can be said to be in the eyes of the beholder.
तो क्वालिटी अगर हम यही वो देखें, जैसे एक सेइंग है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, उसी तरह हम क्वालिटी का भी कह सकते हैं. सो क्वालिटी ऑल्सो लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल डेफिनेशन and one that any institution ignores at its peril. So कोई भी अगर इस चीज़ को इग्नोर करे कि क्वालिटी जो है वो कंज्यूमर की आंख में है या उसकी बेस वो आंख से जज कर सकता है उसकी क्वालिटी या उसकी ब्यूटी, तो वो एक बड़ी पावरफुल एंड इम्पोर्टेंट एक डेफिनेशन से उसको एक्सप्लेन किया. और कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर इस चीज़ पे अटेंशन पे नहीं करेगी अपने कस्टमर नीड्स एंड वांट्स पे, सो देन दे वुड बी in peril of losing their business. Now, it is the consumers who make the judgments on quality. So, ज़्यादातर quality की judgment कौन करते हैं? वो consumers करते हैं. So, Tom Peters, in a discussion of the pivotal role of the consumer in quality, 1987, argues that the perceived quality of a business's product or service is the most important single factor affecting its performance. So Tom Peters के हिसाब से उसने जो है ना pivotal role जब 1987 में he spoke about consumer and quality, he argued in it that the perceived quality of a business product or service is the most important single factor affecting its performance. So उसकी performance पे उसकी quality of the product and service, the business product or service. So he argues that quality as defined by the customer is more important than price in determining the demand for a majority of goods and services, as he says of his researches over the years. So according to Tom Peters, it's not just about the price or having a high priced goods and considering that to be of good quality, but quality को आप जज करते हैं उसके यानी goods and services के demand या majority demand के ऊपर भी नहीं, but how the customer would want it or determining के किस point of view से कोई चीज़ product अगर sale हो रही, that means that they are fulfilling the demand of their customers and fulfilling the rules of the quality or the concepts of it. So as he says over the years, my unequivocal findings would be, number one, that customers, individual or industrial, high-tech or law, science-trained or untrained, will pay a lot for better and especially for best quality. So, customers क्या चीज़ हैं जो individual है या industrial है, ठीक है, high-tech है या law है, science-trained है या untrained है, वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा पे करेंगे, ठीक है, जो ज़्यादा best quality की होगी. Moreover, firms that provide that quality will thrive. So firms that provide जो quality की बेस के ऊपर वो इंडस्ट्रीज चल रही हैं वही जो है सक्सेसफुल है. Now workers in all parts of the organization will become energized by the opportunity to provide a top quality product or service. और workers भी उससे इंस्पायर होते हैं and they try to provide top quality product and service also. No product has a safe quality lead, since new entrants are constantly redefining for the customer possible what's possible for the customer. So when we speak about the consumer role in quality, now in literature it is argued that a customer has 5 roles: resource, co-producer, buyer, user and product. So लिटरेचर में अगर हम कहते हैं तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि कस्टमर के जो है ना, अगर हम ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं ना कि कंज्यूमर रोल क्या प्ले करता है क्वालिटी में, या एक कस्टमर या कंज्यूमर का क्या रोल होता है, तो उसमें अगर हम लिटरेचर में अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कहेंगे कि कस्टमर के या कंज्यूमर के 5 रोल्स हैं, ठीक है, जो क्वालिटी में जिनका प्ले होता है या जिसमें फ़र्क पड़ता है क्वालिटी पे. एक रिसोर्स, ठीक है, जिससे आ रहा है, एक को प्रोड्यूसर है, बायर है, फिर यूजर और प्रोडक्ट का. नाउ ऑफ कोर्स नॉट ऑल ऑफ दीज रोल्स वर एट्रीब्यूटेड टू द कस्टमर्स एट द बिगिनिंग. सो ऑब्वियसली ये स्टार्ट से ही तो नहीं कस्टमर्स को ये रोल्स दे दिए गए थे, ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आए कि कस्टमर्स के ये रोल्स हैं कि वो प्रोड्यूसर्स भी हैं, ठीक है, बायर्स भी हैं, प्रोडक्ट के यूजर्स भी हैं और रिसोर्स भी उनसे मिल रहा है.
So as quality management evolves, the customer's contributions to quality are expanded. तो obviously जब quality management का जो है वो customer के इर्द गिर्द जब evolve होगा तो उसकी contributions obviously quality पे expand होंगी, बढ़ेंगी, और एक कस्टमर की नीड या उनकी contributions बढ़ जाएंगी, which play an important role in quality. Now, during the days of craftsman manufacturing, the role of the customer was simple. जब यानी क्राफ्टमैन मैन्युफैक्चरिंग होती थी, इतनी यानी फैक्ट्रीज नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस वक्त कस्टमर का या कंज्यूमर का रोल जो था वो बड़ा सिंपल सा था. द प्रोडक्ट्स वर मेड और एट लीस्ट एडजस्टेड फॉर ईच इंडिविजुअल कस्टमर, चार्जिंग द कस्टमर टू एक्ट जस्ट ओनली एज अ बायर. तो एट दैट पॉइंट जब पुराने ज़माने में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग क्राफ्टमैन कर रहे थे या कारीगर करते थे, तो एट दैट पॉइंट कस्टमर की या कंज्यूमर का जो रोल था क्वालिटी में वो सिर्फ एक इतना था एज अ बायर. ठीक है, उसका मजीद रोल नहीं था. यानी उसके मुताबिक, उसके कहने के मुताबिक या उसके ऑर्डर के मुताबिक चीज़ तैयार की जाती थी, एंड उसके बाद कस्टमर का रोल सिर्फ उसको खरीदना होता था. Now this buyer role hasn't changed in inspection stage of managing quality, where uniformity in mass production was one of the most important focuses of quality management for uniformity. So it meant profitability in that stage, casting a shadow on customer satisfaction. तो बायर रोल जो है वो उस वक्त से लेके अब तक चेंज नहीं हुआ अभी भी. इंस्पेक्शन स्टेज अभी भी है, कस्टमर चीज़ खरीदते हुए उसको इंस्पेक्ट करता है, जज करता है. ठीक है, और फिर ऑब्वियसली दैट्स अबाउट मैनेजिंग क्वालिटी. ठीक है, और ख़ास तौर पे जब मास प्रोडक्शन हो रही होती है तो एट दैट पॉइंट ऑल्सो अ कस्टमर इज़ managing quality by inspection, going through the inspection stage. So one of the most important focuses जो थी क्वालिटी मैनेजमेंट का वो यूनिफॉर्मिटी थी. ठीक है, एंड दैट मेंट कि प्रॉफिटेबिलिटी एट दैट स्टेज, यानी उनको उससे प्रॉफिट आता था उस स्टेज पे. ठीक है, एंड कास्टिंग ए शैडो ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन. और ऑब्वियसली वो फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन उधर नहीं काउंट होती थी, सिर्फ उनका एज अ रोल बायर, सिर्फ उनका मैस प्रोडक्शन में हम सिर्फ देखते थे कि इंस्पेक्शन स्टेज जो एंड पे था कि जब वो प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है और उसको फिर इंस्पेक्ट किया जाता है कि उसमें ये नहीं वो कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, और कस्टमर इज द कस्टमर हैप्पी विद इट और नॉट. When if they are not happy, then they would return the goods or reclaim their things. So obviously customer satisfaction जो था वो एक कॉन्सेप्ट में यानी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था मैन्युफैक्चरिंग में, बट एट द एंड प्रोडक्ट के हम जज करते थे. Now when we talk about customer oriented service, अब कंज्यूमर रोल हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखते हैं. अगर कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस के हिसाब से अगर हम जज करें तो कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड टू गेन इम्पोर्टेंस एट further stages of quality management as new approaches are embedded in quality measurement. तो आहिस्ता आहिस्ता जब क्वालिटी मेजरमेंट का सिस्टम स्टार्ट हुआ क्वालिटी मैनेजमेंट में, ठीक है, वहाँ पे फिर आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर की ओरिएंटेशन होना शुरू हुई सर्विस में, मैन्युफैक्चरिंग में. ठीक है, और उनको इम्पोर्टेंस देना शुरू किया. अब now the increasing variety of options that a customer may choose from also affected quality managers to consider the importance of customers. So obviously जब वैरायटी आती गई कस्टमर्स में, कस्टमर की चॉइसेस में वैरायटी आती गई, ठीक है, या ऑप्शंस में कस्टमर के पास वैरायटी आती गई. ऑब्वियसली कंपटीशन में जब मजीद प्रोडक्ट्स आना शुरू हुए, पहले दौर में लेट्स से फॉर एग्जांपल वी ओनली हैड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जापान, तो टेलीविजन, डेक या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आता था वो जापानीज आता था या ताइवान का आता था. अब एट दैट टाइम कस्टमर के पास चॉइस कम होती थी, यानी उनको चूज करना, उनको पता होता था कि क्या क्वालिटी का ब्रांड है, सोनी है या पैनासोनिक है, टेलीविजन्स में हमने वो लेना है. अब क्योंकि टाइम चेंज हो गया, अब वैरायटी और कंपटीशन ज़्यादा आ गया, प्राइस की कंपटीशन भी आ गई मार्केट में, सो कस्टमर के पास चॉइसेस बढ़ गई. नाउ हाउ डज अ कस्टमर डील विद दैट कि वो उसका इफेक्ट जो है वो क्वालिटी मैनेजर के ऊपर पड़ा कि एटलीस्ट ऑब्वियसली देखें जैसे अब चाइनीज प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं टेलीविजन्स में, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स कमिंग इन द मार्केट, लोकल मैन्युफैक्चर्ड भी आ रहे हैं. ठीक है, टेलीविजन्स में आप वैरायटी देख सकते हैं. सो दैट इज जस्ट एन एग्जांपल. सो व्हेन वी से दैट द इंक्रीजिंग वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, अब कस्टमर्स के पास ज्यादा है चॉइस करने के लिए, तो
customer may choose from also affected quality managers. So obviously जब variety आई तो उन्होंने quality managers को भी affect किया और उनको फिर समझ आना शुरू हुई कि हाँ customers are important to the quality management program और total quality लाने के लिए customers की opinion बहुत important है. So that's how customers they started realizing that customers or the consumer they do play a role in quality. So as the customer's needs and expectations increase, quality management shifted from only focusing on product conformity to practicing means and tools to achieve overall service quality. So जब customers का आहिस्ता आहिस्ता उनकी needs और expectations बढ़ती गई जब कंपनीज के साथ प्रोडक्ट्स में, तो उस वक्त क्वालिटी मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम था उसका फोकस सिर्फ जो है ना प्रोडक्ट की कंफर्मिटी के से हट के वो इस चीज़ पे भी आना शुरू हो गई कि उनको ऐसे टूल्स या ऐसी चीज़ें ईजाद करनी थी जिससे सर्विस क्वालिटी इम्प्रूव हो. तो ऐसे तरीके ईजाद करने थे जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो और टोटल क्वालिटी का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो. सो ऑब्वियसली कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस के साथ ये चीज़ें बढ़ती गई और उनका रोल जो है क्वालिटी में वो भी बढ़ता गया. ठीक है, द वे दे प्ले अ रोल, उनकी चॉइस, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स, ये चीज़ें ऑब्वियसली उस पर अफेक्ट करने लग गई एंड दे हैड टू स्टार्ट एडिंग मोर सर्विस क्वालिटी to their programs. But at this point now, the customer is no longer just buyer, but also acts as a resource and a co-producer that starts to orient firms by providing inputs regarding the factors that affect production. So obviously companies ने अब कस्टमर से उनका रोल किस तरीके से उन्होंने क्वालिटी में मैनेज करना शुरू किया कि कस्टमर से उन्होंने फीडबैक लेना शुरू किया. अब कस्टमर से जब वो फीडबैक लिया, उनकी ओपिनियन ली और उसके मुताबिक कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और उनकी नीड्स के मुताबिक और उनकी फीडबैक के जज करते हुए उसके मुताबिक जब उन्होंने प्रोडक्शन अपनी देनी शुरू की, ठीक है, ताकि जो कस्टमर की नीड्स है उसके मुताबिक उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ती जाए. जब ये चीज़ हुआ तो एट दैट पॉइंट फिर वो ना सिर्फ कस्टमर जो है वो बायर है सिर्फ, फिर वो रिसोर्स भी बन गया. ठीक है, रिसोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग फीडबैक, देन को प्रोड्यूसर भी हो गया क्योंकि उसके आइडियाज भी यूज हो रहे हैं, उसके फीडबैक भी यूज हो रहा है कि इस प्रोडक्ट में ये चेंजिंग आनी चाहिए या इस प्रोडक्ट में ये एडिशन होनी चाहिए या हमारी ये नीड्स हैं. तो आहिस्ता आहिस्ता firms जो हैं they started orienting and providing inputs, taking inputs from their customers. और जो customers थे they were providing inputs regarding जो है ना factors जो production को affect करते हैं. सो प्रोडक्शन की डिफरेंस पे जो है उनको उनकी ओपिनियंस बहुत काउंट होना शुरू हो गई और उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन में चेंज इन आई. नाउ द आउटकम्स ऑफ द सर्विस मे बी ऑब्जर्व्ड इन द लेटर कस्टमर रोल्स. और लेटर ऑन अगर हम देखें तो हम आउटकम्स जो हैं उसके जो नताइज हैं वो हम जज कर सकते हैं सर्विस के. जो लेटर कस्टमर रोल्स जो हैं उन्होंने क्या क्या प्ले किए. Let's say for example now the buyer role and the user role are the most fundamental roles. यानी सबसे most important roles जो customer या consumer role है quality में, वो एक तो buyer role है और एक उसका user role है. So somebody who is buying the product and somebody who is using a certain product. Now, but the more the need to understand the customer is the more the customer acts as a product. So customer खुद भी एक product बन जाता है. जब कस्टमर को समझने के लिए फर्म्स को या कंपनीज को उनको समझने या उनको अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस, उनकी वांट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मेहनत करते हैं, फीडबैक लेते हैं उनसे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अपनी प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस पॉइंट पे कस्टमर खुद जो है वो एक प्रोडक्ट बन जाता है क्योंकि वो अपनी ही आपको ओपिनियन दे रहा है प्रोडक्शन में. Now, quality management strategies are designed and performed in order to make a transformation in customer. तो quality management के जो प्रोग्राम है या उसकी जो strategies हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि they should perform in order ताकि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक चेंजिंग लेके आ सकें कस्टमर के अंदर.
Now, customers may assume 5 different roles. So when we speak about the 5 different roles, we'll go in detail of कि consumer role जो है quality में वो क्या 5 different roles में किस तरह हम उसको divide कर सकते हैं. So I'll try to exemplify these roles by talking about the influence of customers in financial institutions. So let's say कि हम अभी एक example लेते हैं कि financial institutions में customers का क्या role है, कि उनका क्या influence होता है. So concerning financial institutions such as banks, the contribution of customers to the organization is undeniable. अब जिस तरह के अगर हम कहते हैं कि financial institutions में अगर हम customers का role देखें या consumer role देखें quality में, खासतौर पे let's say for example banks में, तो उस वक्त वो हम उसको deny नहीं कर सकते कि उनका बहुत important role है एक organization में. Now सबसे पहला point, customer as a resource. कस्टमर को हम एज अ रिसोर्स कैसे गिनते हैं. नाउ इन ह्यूमन सर्विस सेटिंग्स द कस्टमर्स आर द प्राइमरी फिजिकल सोर्स रिसोर्सेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो एक ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स जो है ऑब्वियसली फिजिकली जो रिसोर्स है वो ह्यूमन सर्विसेज जहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, या जैसे बैंक्स के अंदर आपके कस्टमर केयर, कस्टमर सर्विस, काउंटर सर्विस होती है, वहाँ पे आपके कस्टमर्स जो है वो फिजिकली प्रेजेंस उनकी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, और वो आपका एक रिसोर्स बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि कस्टमर आएगा तो आपका बैंकिंग का प्रोसेस चलेगा एंड दे आर योर मेन फोकस. नाउ देयरफॉर it is crucial for banks to successfully manage customer resources. तो इसलिए banks के लिए ज़्यादा important है customer resources को manage करना. Now, investigating and studying customers' behaviors, their needs and expectations are vital information that has to be adjusted throughout the processes in order to survive in competitive quality. अब obviously banks में भी competition है, बहुत सारे banks आ गए हैं, मुख्तलिफ टाइप के बैंक्स हैं, ठीक है. अब हर बैंक ये चाहता है कि उसकी ब्रांड की तरफ उसका कस्टमर आए या ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उसके बैंक में आए. सो बैंक्स क्या रोल करते हैं कि वो कस्टमर से वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनका बिहेवियर स्टडी करते हैं, उनकी नीड स्टडी करते हैं, एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं, ठीक है, और उनसे वाइटल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, फीडबैक कलेक्ट की जाती है, जिसको फिर वो एडजस्ट करते हैं पूरे प्रोसेसेस में, ताकि वो कंपटीशन में जो कॉम्पिटिटिव क्वालिटी का सिस्टम एक चल रहा है मुख्तलिफ बैंक्स में, जो हर कोई एक क्वालिटी की दौड़ में है ना, कि किसकी क्वालिटी कौन ज्यादा बेहतर क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, ऑब्वियसली कस्टमर उसी की तरफ जाएगा. तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो कस्टमर से लेके उनके नीड्स और वांट्स के हिसाब से फिर वो ये चीज करते हैं कि उनके प्रोसेसेस जो है वो ऐसे ताकि वो सरवाइव कर सके उस कॉम्पिटिटिव क्वालिटी एरा में. सेकंड हम रोल देखेंगे तो हम कहेंगे कि कस्टमर एज अ को प्रोड्यूसर. अब कस्टमर को अगर हम एज अ को प्रोड्यूसर जज करते हैं, सो द कस्टमर्स रोल एज अ को प्रोड्यूसर इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन सर्विस अरीना. और कस्टमर्स का जो रोल है एक को प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट या खास तौर पे इंपॉर्टेंट किस में है, सर्विस अरीना में, जहां पे सर्विस ह्यूमन सर्विस प्रोवाइड की जा रही है. द एप्लीकेशन सच एज इंटरनेट बैंकिंग, ऐसी एप्लीकेशन जो इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड हो, टेलीफोन बैंकिंग, ठीक है, उससे रिलेटेड हो, ATMs that enable the customer to engage in co-production and enhance customers' abilities as co-producers, ठीक है. सो एप्लीकेशंस ऐसी जिसमें वो ऐड कर सकते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग में खास तौर पे, या टेलीफोन बैंकिंग जो होती है, या ATMs जो है जो कस्टमर्स को एंगेज करती है आपकी को प्रोडक्शन में. सो कस्टमर ATM अगर वो यूज कर रहा है तो वो को प्रोडक्शन में आपका कस्टमर आ गया. आपके कस्टमर की एबिलिटीज कहाँ से इनहांस हो सकती हैं को प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऑब्वियसली जब ये प्रोडक्ट्स जो है आपके बैंक्स के वो यूज करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, टेलीफोन बैंकिंग हो गया, व्हाटएवर, उनका रोल एज अ को प्रोड्यूसर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्विस में. थर्ड पॉइंट, कस्टमर एज अ बायर. तो अगर हमने एज अ को प्रोड्यूसर देखा तो ऑब्वियसली वो शामिल हो रहे हैं, उसमें हेल्प कर रहे हैं, उसके उनका फीडबैक आ रहा है, तो फिर ये चीजें सक्सेसफुल हैं. अगर कस्टमर यूज ही ना करे ये सारे फैसिलिटीज तो फिर वो ऑब्वियसली एक फेलियर होगा. सो
थर्ड पॉइंट जो है कस्टमर एज अ बायर. नाउ कस्टमर एज अ बायर, फाइनेंशियल इश्यूज में समटाइम्स बी टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर सर्टेन कस्टमर्स. सो कई दफ़ा फाइनेंशियल इश्यूज जो है वो कस्टमर्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग या कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं. सो बाय गिविंग एंड शेयरिंग एडिक्वेट इंफॉर्मेशन एंड बाइंग अ ट्रस्टवर्दी familiar relationship, building a trustworthy familiar relationship with customers could help banks to turn potential buyers into actual buyers. So, जब हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल इश्यूज जो है ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं. अब अगर उनके साथ प्रॉपर तरीके से उनको शेयर किया जाए और उनको इंफॉर्मेशन दी जाए प्रॉपर, तो वो हेल्प करती है एक बिल्ड करने में एक ट्रस्टवर्दी और एक फेमिलियर रिलेशनशिप, जिसकी बिना पे जो कस्टमर है वो बैंक्स को हेल्प कर सकते हैं कि ना सिर्फ उनके पोटेंशियल बायर्स हो सकते हैं बल्कि उनके एक्चुअल बायर्स हो सकते हैं. दे कैन बिकम पार्ट ऑफ द बैंक, दे कैन इवन बी देयर परमानेंट कस्टमर्स, दे कैन बी देयर परमानेंट बायर्स, और उनका एक रोल एज अ बायर जो है, मे बी समबडी वुड वांट टू हैव अ शेयर इन इट. सो ये चीज उनकी इनहांस होती है. उसके बाद द लास्ट पॉइंट वुड बी कस्टमर एज अ यूजर. अब कस्टमर यूजर कैसे होता है? सो customers possess the power to measure the gap between expectations and experience, which enables them to determine customer satisfaction. So customers जो है वो possess करते हैं उस power को जिससे वो gap measure कर सकते हैं, ठीक है, expectations के between, ठीक है, और फिर experience से जिनसे उनको enable होते हैं ताकि वो determine कर सकें customer satisfaction. अब again the level of communication, अगर हम नेक्स्ट अगर देखते हैं तो हम जज करते हैं लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो है, शेयर्ड इंफॉर्मेशन, मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, प्ले प्राइमरी रोल इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस गिवन टू द कस्टमर एज अ यूजर. सो कस्टमर के पास ये पावर तो आ गई हमने कि वो एक गैप देख सकते हैं एक्सपेक्टेशंस में और उनका एक्सपीरियंस जो है, कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है और उनका एक्सपीरियंस एक्चुअल क्या हो रहा है. उससे वो डिटरमिन कर सकते हैं कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन है या नहीं है. फिर उसके बाद लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, अगर हम जो सर्विस प्रोवाइड हमें कर रहे हैं, लेट्स से कि काउंटर के पीछे लोग हैं जो हेल्प करते हैं बैंक में, ठीक है, कस्टमर केयर है, ये लोग जो सर्विस क्वालिटी हमें दे रहे हैं, ठीक है, उस पे अब उनकी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कैसी है, ठीक है, वो किस अंदाज से हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, वो क्या कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को प्राइमरी रोल के तौर पे ले रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतर रहे हैं इन द क्वालिटी सर्विस. ये ऑब्वियसली जो है ना, इससे हम कह सकते हैं कि इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस गिवन टू द कस्टमर एज अ यूजर. तो कस्टमर को जो क्वालिटी दी जा रही है सर्विस की, उससे हम जज कर सकते हैं कि उनको क्या ये सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं और उनकी सेटिस्फैक्शन है या नहीं. Then, either the user-friendliness of ATM machines and internet banking affects the customers concerning the quality of service. तो obviously, quality of service जो है वो कंज्यूमर का रोल इसलिए भी प्ले होता है कि वो ये भी जज करता है कि बैंक सिर्फ जो है ये नहीं कि कस्टमर्स के साथ ह्यूमन बीइंग्स कैसे डील कर रहे हैं, बट इवन उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो कितने यूजर फ्रेंडली हैं, ठीक है. लेट्स से कि एटीएम मशीन्स कितने सक्सेसफुल है. अगर एटीएम मशीन्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कस्टमर को सर्विस अच्छी प्रोवाइड हो रही है. या इंटरनेट बैंकिंग है, उनको अगर इजी है तो उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हो रही है. बट अगर उनको इन्हीं चीजों में रुकावटें होंगी तो फिर उनको मुश्किल होगी इसको करने में, and then they will not be satisfied. So customer as a user also plays an important role in quality. Then customer as a product. अब customer as a product हम कहते हैं कि customer खुद एक product बन जाता है. वो कैसे? Now considering customers as products, transformation or change has to be initiated through either purchase of a product, service or use of a product and service. So customers को अगर हम जज करते हैं कि as a product हम उनको अगर consider करें, ठीक है, तो उसमें हमने ये देखना होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी चेंज, तब्दीली किस चीज से आ रही है, किस चीज से इनिशिएट हो रही है, किस चीज से शुरू हो रही है. इधर जो है वो किसी प्रोडक्ट के परचेस से या किसी सर्विस के परचेस से या किसी प्रोडक्ट या सर्विस की यूज से. सो कस्टमर जब उस प्रोडक्ट का या सर्विस को यूज करता है या उसको परचेस करता है, वहां से वो कस्टमर
एज प्रोडक्ट्स गिना जाएगा. सो गिविंग एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो फिर हम दोबारा बैंकिंग को ही एग्जांपल एक रख के अगर बताते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अगर लेट अस अस्यूम दैट अ क्लाइंट विथ अ हाई इन्वेस्टमेंट इन अ बैंक would be an outcome as a product for the services provided by the bank. So अगर हम ये जज करें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये जज कर सकते हैं कि हम अस्यूम कर सकते हैं कि जो क्लाइंट है, अगर हम उनको देखें हाई इन्वेस्टमेंट के साथ, तो इन अ बैंक स्पेशली, देन इट वुड बी एन आउटकम एज अ प्रोडक्ट फॉर द सर्विसेज. वो एक सर्विसेज का प्रोडक्ट का आउटकम बन जाता है, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द बैंक. ठीक है, फॉर एग्जांपल जिसमें पोर्टफोलियो आ जाता है, मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस आ जाते हैं. ठीक है, इट वुड लीड टू पर्सनल गेन और loss most probably affected by choices of the client who is influenced by the employee. So अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम अस्यूम करते हैं कि एक क्लाइंट है, ठीक है, उसने एक बैंक के अंदर हाई इन्वेस्टमेंट की है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है. In a bank would be an outcome as a product for the services provided by a bank. यानी obviously एक कस्टमर हाई इन्वेस्टमेंट बैंक में क्यों करेगा कि जब उसको एज यानी उस प्रोडक्ट का आउटकम में, उस प्रोडक्ट के नतीजे में जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बैंक, लेट्स से कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो दे रहा है या इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जो दे रहा है बैंक, प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उनको फैसिलिटीज दे रहा है, तो ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फैक्शन हुई एंड देन अ कस्टमर वुड इन्वेस्ट हाईली इन अ बैंक. सो आउटकम एज अ प्रोडक्ट हम कहेंगे कि वो हाई इन्वेस्टमेंट जब ही होगी जब उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा कोई बैंक प्रॉपर्ली, एंड इट वुड लीड, फिर वहां से वो लीड कहाँ करता है, जब वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हाई इन्वेस्टमेंट करेगा बैंक में, तो ऑब्वियसली पर्सनल गेन तो है ही, ठीक है, और मे बी या तो गेन होगा, फायदा होगा, या फिर लॉस होगा, मोस्ट प्रोबेबली अफेक्टेड बाय द चॉइसेस ऑफ द क्लाइंट. या तो पर्सनल गेन हो गया या फिर वहां पे उसको लॉस हो गया. लॉस किस सूरत में हो सकता है, सिर्फ मे बी अगर क्लाइंट ने कोई गलत चॉइसेस की है या कोई ऐसी चॉइसेस की है जिससे हु इज लेट्स से के लॉस मोस्ट प्रोबेबली अफेक्टेड बाय द चॉइसेस ऑफ द क्लाइंट हु इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एम्प्लॉय, या कोई एम्प्लॉय ने उसको इन्फ्लुएंस किया है या उसको उसके दिमाग में ये चीज की है कि ऐसे प्रोडक्ट नहीं, आप ऐसा ये ले लें, और फिर क्लाइंट को नुकसान होता है. तो ईदर ही वुड बी इन्वेस्टिंग इन इट if he's happy, or he will be withdrawing investment from the bank, and the bank would be losing him as a customer if the customer isn't happy. So the employee's personal characteristics such as confidence and flexibility would play an important role in the customer satisfaction. और obviously जब employee की choice के मुताबिक अगर client गलत कोई फैसला कर जाता है, वो फिर obviously blame तो employee पे आएगा. अगर एम्प्लॉय की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी जो है, उसकी जाती जो उसकी नेचर है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है या उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, लचक जो होगी, वो अगर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एक कस्टमर की सेटिस्फैक्शन में, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एम्प्लॉय कस्टमर को डील कर रहा है, तो जितना फ्लेक्सिबल एम्प्लॉय अपने आप को शो करेगा या जितना कॉन्फिडेंस शो करेगा या जितनी अच्छी तरीके से सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो ऑब्वियसली कस्टमर उतना ही सेटिस्फाइड वहां से जाएगा. नाउ अप अंटिल दिस पॉइंट यू शुड हैव अंडरस्टूड दैट कस्टमर्स विल नॉट एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट प्रोडक्ट and or a service providers shove into their throats. और एक चीज तो अंडरस्टैंड करने की है ना यहाँ पे कि हम क्यों कहते हैं कि कंज्यूमर का रोल जो है क्वालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी अगर कोई लेट्स से सर्विस प्रोवाइडर है या प्रोडक्ट का प्रोवाइडर है, कोई भी चीज अगर वो कस्टमर पे जबरदस्ती आप डालने की कोशिश करें कि तुम्हें ये चीज लेनी चाहिए, ये यूज करना चाहिए, तो कस्टमर ऑब्वियसली उससे भागेगा और वो चीज, हर चीज तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा ना जबरदस्ती. उसमें कस्टमर की चॉइस तो होगी कि मैंने ये प्रोडक्ट लेना है या मैंने ये सर्विस इस तरीके से लेनी है. नाउ कस्टमर्स, वेल मोस्ट ऑफ देम आर नॉट स्टूपिड. सो हम ये कह सकते हैं कस्टमर ज्यादातर जो है वो बेवकूफ तो नहीं होते. सो इंडीड दे आर गेटिंग स्मार्टर एंड मोर डिमांडिंग. सो जो टाइम गुजरता जा रहा है वो एक तो ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, अक्लमंद होते जा रहे हैं, और उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं. As a result, companies must manage their quality by managing their customers well. So obviously result में फिर कंपनीज को जो है अपनी क्वालिटी को ऐसे मैनेज करना है,
अपने कस्टमर्स को अच्छे तरीके से मैनेज करने से। फिर now the inputs they provide could help managers and employees manage their processes according to customers' needs and expectation. So inputs जो है अगर हम देखते हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, it could help managers और and employees manage their processes. So हम कह सकते हैं कि inputs जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं मैनेजर्स को मदद करने में ताकि वो एम्प्लॉइज को मैनेज कर सकें, ठीक है, उनके प्रोसेसेस को अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, और अपने एम्प्लॉइज को जो है जो मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉइज को उस तरीके से मैनेज करें या वो चीज़ें सिखाएं या वो चीज़ें उनसे उनके प्रोसेसेस में लेके आए ताकि वो कस्टमर नीड्स और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हों। Now moreover, the inputs provided by customers as resources and as co-producers may help organizations to focus on processes as well as to improve continuously. So फिर हम ये कहते हैं कि कस्टमर का जो रिसोर्सेज है एज रिसोर्सेज अगर उनको जज किया जाता है या एज को प्रोड्यूसर्स हम उनको देखते हैं तो वो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है ताकि वो फोकस कर सके अपनी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लाने में अपने organization में. Now the influence of customers as outputs, buyers, user and product could also be observed in cornerstones. और आप cornerstone में obviously customer को जो है ना उनके outputs आप उस तरह as a buyer, as a user या as a product भी observe कर सकते हो और इस तरीके से उनको जज कर सकते हो कि एक customer या एक consumer जो है आपका वो quality में क्या role play कर रहा है. Now the positive transformation that a customer goes through because of a product service could make the employees to be more committed to further improvements on quality. So positive transformations अगर हम जज करते हैं किसी भी कस्टमर के that कस्टमर जिसमें से गुजरता है, ठीक है, चाहे because वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है उसको could make the employees to be more committed to their further improvements on quality. So we could say कि positive transformation जो है एक कस्टमर का या उसमें चेंजिंग जो है कस्टमर में आती है पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑब्वियसली अगर इम्प्रूवमेंट है क्वालिटी में जिसके एम्प्लॉइज जिससे कमिटेड हों कि उनके प्रोडक्ट में या उनके सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट होगी तो ऑब्वियसली कस्टमर भी ट्रांसफॉर्म होंगे पॉजिटिव तरीके से. नाउ दीज रोल्स आर वर्थ एम्फसाइजिंग बिकॉज दे शेप द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कस्टमर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज इन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर. So, हम ये रोल्स को एम्फसाइज इसलिए कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि वो उनको एम्फसाइज करना इम्पोर्टेंट इसलिए या उन पे रोशनी डालना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये एक कॉन्सेप्ट जो है कस्टमर का क्वालिटी में जो उसका रोल है उसको शेप करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में और ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में खास तौर पे. And reinforce the organizations to pursue continuous improvement in overall service quality in order to satisfy all of the 5 roles of the customer. और customer की 5 roles को satisfy करना step by step ताकि वो हर role satisfy हो तो एक organization को reinforce करता है कि वो continuous improvement लेके आए और total quality के programs अपने service quality के programs अपने add करें organization में ताकि वो satisfy कर सकें customer को. So it is clear that many organizations are becoming true partners with their customers in order to maximize the value of both stakeholders. तो हम कह सकते हैं कि क्लियर है कि मैनी ऑर्गेनाइजेशंस में वो ट्रू पार्टनर्स बनते जा रहे हैं कस्टमर्स आपके, ठीक है, या कस्टमर्स के साथ आप ट्रू पार्टनर्स बन जाते हैं ताकि आप मैक्सिमाइज कर सके वैल्यू दोनों स्टेक होल्डर्स के लिए. स्टेक होल्डर कस्टमर भी होगा और पार्टनर भी होगा, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज भी होंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी जब हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है क्वालिटी की, द एक्चुअल क्वालिटी प्रोसेसेस and using quality measures to drive performance and culture are all closely tied to customers. So हम जब एक देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है क्वालिटी की, खासतौर पे एक्चुअल क्वालिटी प्रोसेसेस जो है उसमें लाने में, फिर क्वालिटी मेजर्स इम्प्लीमेंट करने में और परफॉर्मेंस की तरफ ड्राइव करने में, तो और उनका जो एक क्वालिटी कल्चर है वो सारी चीजें जो है वो कस्टमर से रिलेटेड है, क्लोजली टाइड है, क्योंकि उसी से रिलेटेड इनके सारी ये सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेन इंपॉर्टेंट रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. Now, because quality and customers are so closely aligned in successful organizations, the two concepts are intersecting into a customer-centric quality culture.
तो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज या फर्म्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स यूज कर रहे हैं या क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स यूज कर रहे हैं, उनके ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी जो है वो कस्टमर्स के साथ इसलिए बहुत क्लोज है और साथ साथ चल रही है कि वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस में स्पेशली, क्योंकि वो दोनों कॉन्सेप्ट्स जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और वो बन जाता है कस्टमर सेंट्रिक क्वालिटी कल्चर बन जाता है, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली एक क्वालिटी कल्चर वो डेवलप हो जाता है जिसमें कस्टमर की नीड्स और कस्टमर जो है ना सेंटर ऑफ फोकस होता है और कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. Now the emphasis was placed on customer service and product performance rather than two-way engagement or quality and what it means to the customer. So emphasis हम ज़्यादा डालते हैं customer service के ऊपर, ठीक है, product performance पे, rather जो है ना अगर हम जज करें कि two-way engagement जो है या quality की जो what it means to the customer, खासतौर पे जो कस्टमर के लिए मायने रखता है, या तो प्रोडक्ट कस्टमर सर्विस एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है, जो एक टू वे बन जाता है, एंगेजमेंट भी और क्वालिटी भी, और ये दोनों कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ व्हेन लुकिंग एट व्हाट ड्राइव्स द इंटरसेक्शन ऑफ कस्टमर एंड क्वालिटी, द एनालिसिस फाउंड 4 की फैक्टर्स. सो अगर हम जज करते हैं कि टोटल रोल के एक कस्टमर का जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है उसकी क्वालिटी का, तो हमने 4 की फैक्टर्स देखे हैं. मेन नंबर 1, द रोल ऑफ क्वालिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटी का रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ गोल्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में उनके गोल्स क्या है, levels of transparency on quality goals and reporting, और obviously बहुत fair और honest होने चाहिए quality goals भी और उनकी reporting भी जो है जो senior management को जाए, and how the quality measures are used, और किस तरीके से quality measures इस्तेमाल होते हैं. ये सारी चीजें जो है drives the intersection of customer and quality, और customer और quality को join यानी आप judge कर सकते हो इन चारों चीजों के साथ. So when we speak about these 4 key factors, we would say कि integration of goals in strategic planning, तो ये चीज़ें important हैं ताकि आप एक जज कर सके कि एक कंज्यूमर या एक कस्टमर जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड है या किस तरीके से उसका इन्फ्लुएंस या उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रही हैं, एंड हाउ द कंज्यूमर plays a role in quality. So all of these things considered, we would say that a consumer plays a role in quality in a very important way. Obviously, consumer role जो है उसकी satisfaction है. Customer या consumer की satisfaction नहीं है तो obviously वो आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर डिमांड ही अगर नहीं करेगा क्वालिटी तो फिर कंपनीज क्वालिटी प्रोवाइड भी नहीं करेंगी. सो जब ऑब्वियसली कंपनीज ने क्वालिटी प्रोवाइड वहां से करना शुरू किया जहां पे कस्टमर्स की डिमांड्स बढ़ गई, तो डिमांड्स के मुताबिक उनकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ गई. तो अब ऑर्गेनाइजेशंस का एक मस्ट हो गया है कि उनको एक उनकी क्वालिटी गोल्स फिक्स्ड हों, ठीक है, और उनके ऐसे क्वालिटी मेजर्स यूज करें जिससे कस्टमर का जो है ना सेटिस्फैक्शन शो हो. So that's how we can say that a consumer plays an important role in quality in organizations. Now, quality control, quality assurance and total quality अगर हम देखें, so as well as providing a definition of quality, it is necessary to understand the difference between 3 other important quality ideas. So ना सिर्फ डेफिनेशन समझने की आपको ज़रूरत है, बट इट ऑल्सो इज़ इम्पोर्टेंट टू डिफाइन इट कि किस डिफरेंस जो है बिटवीन इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ and less important. Now these are the distinctions made between quality control, quality assurance and total quality. So ये चीज़ हम किस बेस के ऊपर हम जज कर सकते हैं कि it's not just about the definition of quality, but it is also necessary to understand the difference between the other 3 important qualities जो है ना idea, वो उनमें से जो है distinctions quality control आ गया, quality assurance आ गया and total quality आ गया. इन तीनों का फर्क मालूम होना बहुत ज़रूरी है. So quality control is the oldest quality concept. So quality control जैसे मैंने आपको बताया था वो सबसे पुराना concept है जिसमें they were checking quality at the end of the production.
or after the end of the product being produced. Now it refers to the detection and elimination of components or final products that are not up to standard, और जो up to standard ना हो उनके final components या products को judge करने के लिए, यानी उनका standard judge करने के लिए quality control का system use होता था. Now it is an after the event process concerned with detecting and rejecting defective items. So when considering, now if we talk about quality control, quality assurance and total quality, these are the three concepts of quality, and they could be defined. Without them, defining quality would be very difficult. So as a method for ensuring quality, it may involve a considerable amount of waste, scrap and reworking if we are going with the old concept of quality control. So quality control would be that it is after the event, a procedure of checking or inspecting a product after it has been made. Now, quality controllers or inspectors usually carry out quality control. So inspection and testing are the most common methods of quality control and are widely used in education to determine whether standards are being met or not. So inspection और testing जो है वो most common method है quality control को check करने का और ये judge करने का कि वो educational system में standards properly meet कर रहे हैं या नहीं. So quality assurance now would be a little different from quality control. Quality control was one of the old concepts, and quality assurance is different from quality control. So it is before and during the event process concerned to prevent faults and occurring in the first place. So quality assurance किस चीज़ में आती है? Quality control checks the product or the service after it's been completed. Quality assurance would be doing the thing opposite, जो है ना वो start में उसको देख रहा होगा कि कोई भी faults या कोई भी during the process जो है उसमें कोई भी ऐसी faults occur ना हो first place में. Now quality assurance is about designing quality into the process to attempt to ensure that the product is produced to a predetermined specification. So quality assurance जो है वो specified standard के ऊपर किसी product के उसको वो judge करना कि वो उस level तक जो है ना उसकी production या उसके process of production जो है वो complete हो रही है. Now, but simply quality assurance is a means of producing defect and fault-free products. So अगर हम simply ये चीज़ देखें तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है ना इनबिल्ट प्रोसेस है जो प्रोसेस प्रोडक्शन के दौरान होना इनबिल्ट होगा एक पूरे सिस्टम में ताकि जो प्रोड्यूस हो प्रोडक्ट जो भी वो डिफेक्ट एंड फॉल्ट फ्री हो. नाउ द एम इन द वर्ड्स ऑफ फिलिप बी क्रॉस्बी इज जीरो डिफेक्ट्स. सो फिलिप बी क्रॉस्बी के हिसाब से इसको हम जीरो डिफेक्ट्स के नाम से जानते हैं ना, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस इज अबाउट कंसिस्टेंटली मीटिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन or getting things right the first time and every time. So quality assurance के हिसाब से अगर हम देखें तो वो आप specification के ऊपर first time में ही fulfill हो and उसका जो है you keep on getting it the things right for the first time और हर दफ़ा वो correct ही system में quality यानी maintain हो. Now the quality of the good or service is assured by there being a system in place known as a quality assurance QA system. Now quality या good जो है services के हम assure कैसे कर सकते हैं कि being in a system in place that it is known as a quality assurance QA system that lays down exactly how production should take place and to what standards. तो ये एक वो चीज़ डिफाइन कर देती है कि प्रोडक्शन किस तरीके से होनी चाहिए और किन स्टैंडर्ड्स की बेस पे होनी चाहिए. ना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड by following the procedures laid down in the QA system. So quality assurance is the responsibility of the workforce, usually working in quality circles or teams, rather than the inspector, although inspection can have a role to play in the quality assurance. So quality assurance जो है वो ये responsibility कर रही है कि workplace पे usually जो है वो quality circles और teams बने, ठीक है, and they would inbuilt and inspect the product or the process during the production.
And we can say that maybe at that point inspection would play a certain role also in quality assurance at the end, also to check if they have maintained the quality process during it. Now, total quality management incorporates quality assurance. So, अगर हम total quality management को देखें last उसके aspect को third को, so it would incorporate quality assurance and extends and develops it और उसको मज़ीद develop करता है. Now, TQM, total quality management, is about creating a quality culture. एक culture create हो जाए quality का, where the aim of every member of staff is to delight their customers, and where the structure of their organization allows them to do so. So in TQM, the customer is sovereign. It is the approach popularized by Peters and Waterman in 1982, and which has been a constant theme of Tom Peters' writings ever since. So TQM, total quality management, is about providing the customer with what they want, when they want it, and how they want it. So it involves making, moving and changing customer expectations and fashions to design products and services that meet and exceed their expectations. So only by delighting customers will they return and tell their friends about it. This is sometimes called the sell-on definition of quality. Now, the perceptions and expectations of customers are recognized as being short-term and fickle. And so organizations have to find ways of keeping close to their customers to be able to respond to their changing tastes, needs, and wants. So it is always necessary to ask two fundamental questions when trying to understand quality in any situation. The first is, what is product? The second is, who are the customers? These questions are equally applicable to the discussion of quality in education. So ये सिर्फ product जो है सिर्फ production या किसी goods से related नहीं है, but even in education system में भी हम उसको applicable कर सकते हैं और उसको we can think about what is the product, what is the product is what we are offering, and who are the customers who are we are catering to. ठीक है, ये दो मेन इम्पोर्टेंट फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिस पे हम क्वालिटी को जज कर सकते हैं कि हाउ टू डिस्कशन ऑफ क्वालिटी ऑन इट एंड हाउ टू मेंटेन द क्वालिटी. सो द प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन, लेट्स से, इज एन एरिया ऑफ डिफिकल्टी. There are a number of different candidates for it. The pupil or the student is often spoken about as if they fulfill that role. So student और जो है वो इस तरह यानी उनको जज किया जाता है कि maybe they are fulfilling the role of let's say the product of education. So in education they would be the product of education. That's what they are learning from an institution, and they're going out into the market, and they are the ones who would be taking their knowledge with them from that organization or educational institution. So in education, if students, we consider this, we would consider that maybe in education, if we often talk as though the learners are the output. So output agar hum sirf learners ko judge kare, or let's say that the product of education is an area of difficulty. So there are a number of different candidates for it. The pupil of the student is, or the student is often spoken about as they fulfill the role of the output or the product of the certain institution or educational institution. So in education we would often say that talk as the learners are the output, especially with reference to the institution's perceived performance over discipline and behavior. So terms like the supply of graduates make education sound like a production line with students emerging from the end of it. So in a way, अगर हम इस point of view से देखें ना कि the supply of graduates जो है वो एक ऐसे feel देता है educational institutions को कि like they are a part, the students are a part of the production line, and they are the end result coming out of the education system. Now the problem with this definition is that it is difficult to square it with much educational practice.
So the only thing that is difficult or hard to describe would be that it is difficult to square it with much educational practice. So educational practice के साथ उसको judge करना या उसको compare करना would be very, very difficult. Now, for a product to be the subject of quality assurance process, the producer needs firstly to specify and control the source of supply. So टोटल यानी अगर आप ये देखेंगे क्वालिटी अश्योरेंस के लिए अगर प्रोसेस में चलना है तो प्रोड्यूसर ने ये चीज़ देखनी है कि उसने फर्स्टली क्या स्पेसिफाई करना है कि सोर्स ऑफ सप्लाई उसको कंट्रोल करना. Secondly, raw material must pass through a standard process or set of processes, and the output must meet predetermined and definite specifications. So, raw material जो होगा वो उसको एक vigorous और standard process में से गुजरना है, ठीक है, जो set processes हैं, जिसमें से उसने ये predetermined standards के ऊपर जो है specifications के ऊपर defined specifications पे they have to meet those specifications. So, such a model does not easily fit education. So, ऐसे model को हम easily हम education पे fit नहीं कर सकते because we can't call the students who are starting there as raw material and then they're passing through standard of processes and becoming the end product of it. So although there are those who might wish it would. So such a model would clearly require an initial selection of learners to be made. So some sectors of education do this, but many following the comprehensive principle of open access do not. So it is from there on that the analogy begins to fall apart. Now, while processes such as the national curriculum and the specification of standards and competencies in the national vocational qualifications (NVQs) in the UK have improved the standardization of the process, nevertheless, the process of education is anything but uniform. So, it is impossible to produce pupils and students to any particular guaranteed standard. And as Lenton Gray has put it in his very useful discussion of the issue, that human beings are notoriously non-standard and they bring into educational situations or a range of experiences, emotions and opinions which cannot be kept in the background of the operation. So judging quality is very different from inspecting the output of a factory or judging the service provided by a retail outlet. So the idea of the learner as the product misses the complexities of the learning process and the uniqueness of individual learner. So what then is the product? So rather than answer this directly, it is more useful maybe to view education as a service rather than a production line. So if we consider हम education को अगर हम production line में ना consider करें but as a service consider करें, so then that would be maybe more appropriate to it. The distinction between a product and a service is important. So इन दोनों में जो distinction है वो बड़ी important है because there are fundamental differences between them. Now that have a bearing on how their quality can be assured. So उनके अंदर fundamental differences हैं product और service में और उनकी ये assure करना कि उनके अंदर quality कैसे maintain हो रहा है ये चीज़ भी दोनों different aspects और different concepts से किया जा सकता है. Now, service quality characteristics are more difficult to define than those of for physical products. So, service quality characteristics जो है, they would be more difficult, हम define करना उनको difficult होगा than the physical products. So, this is because they include many important subjective elements. The causes of poor quality and quality failure are materially different for services and products. Now, products often fail because of faults in raw material and components. Their design may be faulty or they may not be manufactured to specification. So poor quality services, though, on the other hand, are usually directly attributed to an organization's behaviors or attitudes. So they often result from lack of leadership, care or courtesy
Indifference and lack of training or concern are the ethical principle reasons for a breakdown of service. So दो चीज़ें अगर आप सर्विस क्वालिटी जज करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों डिफरेंट हैं. अगर आप प्रोडक्ट्स का देखें तो प्रोडक्ट्स फेल हम उनको किस तरह जज कर सकते हैं कि किसी रॉ मटेरियल में गड़बड़ है या कोई जो है कंपोनेंट्स उसके ठीक नहीं है या उसको कोई स्पेसिफिकेशन के मुताबिक मैन्युफैक्चर नहीं किया गया. लेकिन क्वालिटी पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को हम कैसे जज करेंगे? वो हम जज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर और एटीट्यूड से, या उनकी लीडरशिप में कोई फॉल्ट है, या उनके केयर एंड कर्टसी में फॉल्ट है, या लैक ऑफ ट्रेनिंग है उनको, या they would like, these would be the different concepts जो है जो एक सर्विस का ब्रेकडाउन या उसके फेलियर में important रोल होगा जिनका. Now services differ from production in a number of important ways. So there are major differences between delivering a service and manufacturing goods. So there are major differences, we would say कि किसी सर्विस को डिलीवर करने में या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में. Now the first difference between the two is that services usually involve direct contact between the provider and the end users. So services are delivered directly by people to people. There is a close relationship between the customer and the person who delivers the service. So उस जगह पे इसलिए क्योंकि उनका वो एक रिलेशन, वो क्लोज रिलेशन एंड पर्सन टू पर्सन एक सर्विस डिलीवर हो रही है, तो इट वेरी इम्पोर्टेंट कि उस जगह पे उनका कस्टमर केयर या उनका एटीट्यूड या बिहेवियर उनका बहुत पॉजिटिव हो. द सर्विस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन डिलीवरिंग इट और फ्रॉम द पर्सन रिसीविंग इट. सो पर्सन जो डिलीवर कर रहा है या रिसीव कर रहा है उससे जो है ना उसको सर्विस को सेपरेट नहीं किया जा सकता. इट कैन नॉट बी कि सर्विस क्वालिटी की है, वो जो पर्सन उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो क्वालिटी नहीं दे रहा, ऐसे नहीं हो सकता. इट हैज टू बी अ कंबाइंड एफर्ट. Now every interaction is different and the customer in part determines the quality of the interaction. So the quality of the service is determined both by the person delivering and the person receiving the service. So unlike products, there can be no absolute consistency or homogeneity in service delivery. So the consistency of the service can only be within boundaries. Time is the second important element of service quality. Services have to be delivered on time, and this is as important as their physical specification. उनके physical specification जितनी important होना चाहिए कि उनके services जो है वो time पे deliver हों. Now additionally, as a service is consumed at the moment of delivery, the control of its quality by inspection is always too late. So the close personal interactions found in services allow multiple opportunities for feedback and evolution, and these provide the main but not the only means of judging whether customers are satisfied with it. So the third difference is that unlike a product, a service cannot be serviced or mended. ठीक है, प्रोडक्ट की तरह सर्विस जो है उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते. When you delivered it, that's what you delivered. So a poor meal is a poor meal. It cannot be repaired. It cannot be fixed. So services is more difficult to provide quality in services than in a product. Now for this reason, it is important that the standard for services should be right first time and every time. So paradoxically, it is the high possibility of human error and failing that makes it difficult, if not impossible, to achieve the right first time standard. So nevertheless, that should always be the aim. And it's impossible maybe for the first time to get everything right, but that should be the basic aim. Now, fourthly, service face the problem of intangibility. It is often difficult to describe to potential customers exactly what is being offered. So, कभी customers को ये define करना कि हम क्या offer कर रहे हैं services में, वो बड़ा difficult हो जाता. It is equally difficult on occasions for customers to describe what they want from the service. So, services are largely about process rather than product.
So it is usually more important how an outcome is arrived at that, what the outcome is. Now, the fact that services are usually rendered directly to customers by junior employees is the fifth distinguishing feature of the service. So senior staff are generally remote from customers, and most customers never have access to senior managers. So customers usually, जो senior managers है या senior staff है, वो customers को deal नहीं करता, but junior employees would be dealing with customers. So the quality of the initial interactions colors the view customers have of the whole organization. And so the organization has to find ways of motivating frontline employees always to deliver their best. And this is why the training and staff development are a crucial importance. तो ताकि जो लोअर जूनियर लेवल एम्प्लॉइज़ हैं वो अपने सर्विसेज प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर सकें, इसलिए उनको ट्रेनिंग प्रोसेस में से गुजरना स्टाफ की और एम्प्लॉइज़ की वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है. Now, while senior managers may not serve at the front in service organizations, they must lead from the front to convey to their staff their vision of the service and the standards they want set for it. So lastly, it is very difficult to measure successful output and productivity in services. The only meaningful performance indicators are those of customer satisfaction. So intangible or soft measures are often as important to success as to the customer as are hard and objective performance indicators. So soft indicators such as care, courtesy, concern, friendliness, and helpfulness are often uppermost in customers' minds. Intangibility makes it very difficult to turn around poor service. So because it is sometimes impossible to convince dissatisfied customers that a service has changed for the better. So consumers judge quality by comparing their perceptions of what they receive with their expectations of it. So much of this is also true for education also. So reputation is crucial in an institution's success. वो तो आपको मालूम है कि educational institution में reputation बहुत important है. But the origin of that reputation often defies analysis and measurement. What we do know is that the reputation has a great deal to do with the care and concern shown to the pupils and students. So for the purposes of analyzing quality, it is important or more appropriate to view education as a service industry than as a production process. So once this view is established, the institution needs to define clearly the services it is providing and the standards to which they will be delivered. So this needs to be carried out in conjunction with all its customer groups also, including discussions with governors, parents, and with industry directly or via local education business partnerships. So we have defined education as a provider of services. Its services include advice, tuition, assessment and guidance to pupils and students, their parents and sponsors. Now the customers, the stakeholders of the service are very diverse group and need identifying. If quality is about meeting and exceeding customers' needs and wants, then it is important to be clear whose needs and wants we should be satisfying. So it is important to say something about the idea of a customer in the context of education. So to some educationalists, customer has a distinctly commercial tone that is not applicable to education maybe, but they prefer to use client instead. So client with its connotations of professional service is seen as more appropriate. Stakeholder is another term often used in this context. So others reject all the such language and would rather stay with pupil or student. So language is important if an idea is to be acceptable. Some people would maybe make a distinction between clients who are the primary beneficiaries of the education service and customers and who pay for it, but who may be once removed, such as parents, governors, employees and governments.
The diversity of customers makes it all the more important for educational institutions to focus on customer wants and to develop maybe mechanisms for responding to them. So it can be helpful to make distinctions between primary customers who directly receive the service, secondary customers such as parents, governors, sponsoring employees or vocational students, all of whom have a direct stake in the education of a particular individual or in a particular institution. Tertiary customers who have a less direct but nonetheless crucial stakeholding in education, such as future employees, government and society as a whole. Internal customers who have a critical stake holding in the organization's success. So the needs and views of the various customers groups, whether they are internal or external, do not always coincide. So especially in large and complex institutions, maybe we would say that although the conflict can equally be present in smaller ones, but in larger ones we would consider them, that potential and actual conflicts of customer interest will always exist. So one of the best methods of resolving different interests is to recognize their existence and to look for the core of the issue that unite the various parties. So all stakeholders need to have their views listened to and to be treated fairly. So quality and justice go hand in hand. This is particularly the case when dealing with complaints, let's say, which are instances of those critical incidents where it is impossible to judge how committed an institution is to customer first approach, maybe. So it is often difficult to ensure that the primary customers' views are paramount. There are strong forces pulling against it, not least those that can be exerted by funding processes and mechanisms. Where the needs of the learner and funding mechanisms collide, it is very difficult for an institution to put its learners first. So this is particularly the case where funding mechanisms emphasize efficiency that can only be achieved at the cost of quality. So for example, a staffing cut may lead to a higher pupil-teacher ratio, or a funding cut may lead to a reduction in service that may not accord with the customers are feeding back. And this is a very difficult issue to resolve. And total quality management does not provide ready answers to it. So what it does is to ensure that the institution's processes keep the learner's views center stage. So in education, like you see, judging quality according to the maintaining, we cannot resolve that total quality management rules or processes or tools cannot, let's say, improve or resolve as such an issue, but they can maybe just provide the success that the process of quality could be maintained in an institution. Anyway, students, thank you so much for today's lecture, and I hope that you do understand it clearly. So this was just an example of how we could implement total quality management into the education and its customers, and how the students and the parents would react, or what are their wants and needs. So we'll continue in the next lecture. Good day.